Hello, ladies and gentlemen. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. Today I'm going to talk about Libra Ascendance and 2021 resolution. Guys, predictions एक अलग चीज़ होती हैं, resolutions एक अलग चीज़ होती हैं. जब कोई नया साल आता है तो हम सब प्लान करते हैं. कोई प्लान करता है कि यार मेरे को बड़ा स्मार्ट दिखना है, कोई करता है मुझे बड़ा पैसा कमाना है, कोई प्लान करता है मुझे फॉरेन पीआर लेनी है, कोई कुछ प्लान करता है. तो मैं अपनी ये सीरीज़ बना रहा हूँ आप दोस्तों के लिए. प्रेडिक्शंस के बारे में एक मेरी अलग सीरीज़ आएगी, लेकिन रेवोल्यूशन के बारे में 2021 लिब्रा के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि लिब्रा असेंडेंस के लिए ये ईयर 2021 थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा, जिसमें थोड़े से आपको क्राइसिस भी देखने पड़ेंगे. फाइनेंशियल क्राइसिस भी हैं जिसमें आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं जॉबलेस भी होना पड़ेगा. आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम नहीं बनेगा लिब्रा. तो इस समय में हम क्या करें? देखिए, पॉजिटिविटी तो एक की है, वो तो सबके लिए है, सब असेंडेंस के लिए है. चाहे आदमी अच्छी स्थिति में भी हो तो भी उसको पॉजिटिव रहना चाहिए, बुरी में हो तो भी पॉजिटिव रहना चाहिए. लेकिन कुछ रेजोल्यूशंस ऐसे हैं जो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वो फॉलो करते हैं यू विल डेफिनेटली रॉक इन योर टफ टाइम. देखिए, रॉक का मतलब ये नहीं है कि आपका टाइम ही बदल जाएगा. रॉक का मतलब ये है कि आप अपने बुरे समय में भी आपके अंदर इतनी मजबूती आ जाएगी कि आप एक तूफान आएगा, आपको टकराएगा और वो आपको टकरा कर वापस चला जाएगा. यानी कि यू विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड. आपको पता होगा कि यार ये मेरा साल ऐसा जाने वाला है, तो मैंने अपने इस साल को ऐसे डिज़ाइन करना है. सो लिब्रा असेंडेंस आपके लिए ईयर 2021, फर्स्ट ऑफ ऑल रेवोल्यूशन नंबर 1, कर्म को अपना धर्म माने, धर्म को कर्म ना माने, कर्म को अपना धर्म माने. यानी कि इतना ज़्यादा निष्ठा भावना के साथ आप अपना कर्म करें. आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, आप कुछ भी करते हैं, लेकिन जो आपका कर्म है ना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी लाइफ की. बीवी बच्चे फैमिली 2 मिनट के लिए साइड पे रख दो 2021 के लिए. सिर्फ कर्म आपका जो है, अगर वो स्ट्रांग होगा, आप पैशनेट होगे अपने काम के प्रति, दिल से करोगे, वर्स्ट सिचुएशन में भी आपने अपने एफर्ट लगा देने. देखिए दोस्तों एफर्ट सारे करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जब वर्स्ट सिचुएशन आती है ना, तो आदमी घर से ही नहीं बाहर निकलता, या उसका घर से बाहर निकलने को दिल नहीं करता, क्योंकि वो डिप्रेशन में चला जाता है. तो डियर फ्रेंड्स लिब्रा, आई जस्ट टेल यू कि यू मे फेस सम वर्स्ट पोजीशन इन 2021, बट आप अपने एफर्ट्स लगाते रहें, अपने कर्म को अपना धर्म बना लें. रेवोल्यूशन नंबर 1, योर कर्मा इज योर धर्मा, your karma is your religion, your karma is your religion. This is your tagline Libra in 2021. If you follow my all these guidelines, you will definitely sky high in your worst days. And don't trust on others in 2021. Don't invest your money in real estate or a stock market. Don't invest your money anywhere Libra, because this is not very fruitful year for you. You will see a lot of financial crisis. Your savings will be spend in wastage. Unexpected expenditures will irritate you. Don't buy any property, because you will get some chance to buy property, and if you investing your money in property, you will be in a deep crisis. You have to wait in 2021 to invest your money in real estate or buying your own house. If you are on rent, you should be stay on rent in 2021. Don't buy your own property. Resolution number 1, I again tell you, your karma, your work is your religion. Your work is your religion. If you follow this thing, if you follow this line, you will definitely grow in 2021. Otherwise, you will be a part of any litigation or problem. Libra, you need to focus on your things, because time is not very productive. Someone may cheat you. Some over expenditures will irritate you. If you are interested to settle in foreign land, then Jupiter will help you in the first quarter of 2021 and the last quarter of the 2021. But that is not very promising. If you have a good Mahadasha and Antardasha in your birth chart, you will definitely rock. Otherwise, you will face a lot of troubles, delay, hurdles, and you will face a lot of sorrow. Relationship with your spouse is not better. Relationship with your family is suffering. Libra, you need to focus on these things. Health of your father, matter of concern. You need to be in a good talks with your father. You should take some blessings from your father's side. Don't ignore your father's health. Don't ignore any type of issue related to your father. Always give respect to your father. Libra, revolution number 2 for you. If you give respect to your father and take care of your father, that will be a very good for you. Otherwise, relationship with your family and spouse will be under shadow. You are not in a comfort zone. आप सब कुछ करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, लेकिन जो आपके रिलेशनशिप होंगे आपके स्पाउस के साथ या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो ज़्यादा अच्छे ना होंगे. लिब्रा, आपको ज़रूरत है
पॉजिटिव होकर चलने की, भगवान पे आस्था रखने की, क्योंकि ईयर 2021 थोड़ी सी स्ट्रगल लेकर आ रहा है, थोड़ा सा डिले लेकर आ रहा है। चीज़ें वैसे काम ना करेंगी जैसे करनी चाहिए। भगवान शिव की उपासना करें, गायत्री मंत्र की उपासना करें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, फ्राइडे के फास्ट रखें। देखिए, जितना ज़्यादा गायत्री मंत्र पढ़ेंगे उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून आपके लिए काम करेगा। रेवोल्यूशन नंबर 3 है, मस्ट चैंट गायत्री मंत्र 108 टाइम, 121 टाइम, 251 टाइम। More you chant this mantra, more you get fantastic results. Libra, you need to be careful in 2021. Someone may cheat you. You may lose your money in stock market. Don't go for intraday. If you want to play something in stock market, then play safe and secure game. Otherwise, your funds will be, you will be lose your funds. You will lose your capital. Don't invest your money in real estate. I'm telling you again and again. Don't follow any other person, follow your mind. And if your mind say you want to buy your property, then you have to wait in 2021, because this is not very productive year for you. Don't buy any vehicle. Keep saving in your account, keep saving in your bank balance, because that will be help you a lot in 2021. Cash flow, if you have a cash flow in your hand, then year 2021 will be promising for you. Otherwise, you will be a part of litigation, you will be a part of any type of financial crisis. So everything is in your hand. Libra, if you follow my all these guidance, you will definitely sky high. You need to be careful while talking with your spouse. You need to be careful while talking with your family members, your parents, because if you show your attitude or ego, you will be a part of problem. This is not a very productive time for you. Be humble, be polite, and do your good karma. Your work is your religion. This is your first resolution of 2021. Don't trust on stranger, don't buy property, don't invest your money in stock market, don't invest your money anywhere. If you're a businessman, whatever you invest in 2020, you can move with that. Don't invest any new funds in your business. If you are a trader, any type of manufacturer, if you are any type of shopkeeper, don't invest your money in your business. Otherwise, you will be a deep financial crisis. Don't take any type of loan. You are not able to pay you back. If you are already in debts, then you need to be careful. In 2021, you need to take more money as a debts from your friends or bank. This is not very productive year for you, Libra. Concentrate on your things and be honest, man. This year will give you a lot of challenge, lot of obstacles, struggles, and you will learn a lot of things from your obstacles and struggle. And you become a diamond after 2021, but you need to polish yourself. Your religion is your work. This is first resolution of 2021. Don't trust on stranger, don't trust on any other person, don't invest your money in stock market or real estate. Must read, must chant Gayatri mantra every day morning, must chant Lakshmi Chalisa every day morning. It will make your life easy and better. It will give you a lot of strength to face the obstacles and challenge. 108 time, 151 time, 251 time, more you chant this mantra, more you achieve the things. Libra, your work is your religion. Your work is your religion. Your work is your religion. This is your tagline in 2021. Thank you for watching my video. I'm praying for you a happy 2021. Stay cool, stay happy, keep in touch and keep watching my videos. Thank you for your love and trust. I'm praying for you a happy 2021. Namaskar. Jai Hind.